So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having a static GK discussion class. So we are here with the same class. So am I audible, visible? If yes, then please write yes in the comments. Is my voice clear? So basically we were discussing in the last class from question number 21. So we had discussed thoda sa last class ka bacha hua hai. So we'll discuss that PPT and then we will actually discuss further. So yesterday's class we discussed this, that the headquarters of United Nations is in New York. Ye last question tha, hai na? And we had discussed it. This is the beautiful building of United Nations headquartered. And this is actually the UN Secretariat building. So who is the head of UN Secretariat building? You have to answer it from here. This is actually the image from New York, है ना? बताइए. UN Secretariat का head कौन होगा? UN Secretary General. There are 6 principal organs we have discussed. ठीक है. एक क्लास है, आप जाके इसको सर्च कीजिएगा. UN Career Launcher. ऐसे सर्च कीजिएगा. You will get a video on YouTube where I have discussed about 6 principal organ of UN. One of the principal organ is actually the UN Secretariat, which is headed by UN Secretary General. Very good. What is his name? Antonio Guterres. And he's from which country? So the answer is Mr. Antonio Guterres. And he is from which country? ये भी पूछते हैं एग्जाम में. Yes, many people are answering it. So country का नाम बताइए. Portugal. Very good. हाँ. These are the things you should be knowing about. Okay. So yes. So there are 6 principal organ of UN. There is India. This is US. This is New York. So out of these 6 principal organ, 5 are actually headquartered in New York, and 1 is somewhere here. The Hague is a city in Netherlands. And here you will find the ICJ, International Court of Justice. Okay. That is what you should be knowing about. And by default, if someone is asking where is the headquarter, main headquarter of New York, main headquarter of UN, so the answer would be New York. Okay. Yes. Let's move on to the next question. And I hope you all should be answering it. The G20 summit is going to be held in Rio, Brazil, Rome, Italy, Geneva, Switzerland, Johannesburg, South Africa. Please answer this question. I want you all to answer it correctly, and please think it and then before that, before answering. Yes, Priyanshi Goel, you are right now. Now you are correct. I think ऐसा तो नहीं होता है कि कोई एक आंसर करते हैं बाकी कॉपी करते हैं. Yes, it's actually in Johannesburg, South Africa. D is the right answer. What happened? I was surprised people were answering A. So what happened is going to be held in, अभी हुआ नहीं है, Johannesburg, South Africa. So what happened recently in Rio, Brazil? यहाँ क्या हुआ था? That is why you have to be very careful. ठीक है, जल्दी में आंसर गड़बड़ हो जाता है, बट आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसमें फिर बाद में खल जाता है. Okay, because there is negative marking also. So you will get +1, and if you are wrong, -0.25. So one silly mistake will cost you 1.25 marks. ठीक है, एग्जाम में चूंकि एक तो नंबर मिलेगा नहीं और उल्टा घट जाएगा क्योंकि आपने गलत कर दिया. हाँ, यस प्रियांशी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो यहाँ पे अगर गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाई वी डिस्कस इट, सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो. दैट इज व्हाई वी टेल यू तो प्लीज अटेम्प्ट द मॉक्स. द रीजन इज वेरी सिंपल, ताकि आपको इतना बार प्रैक्टिस हो, इतना बार हो, सिली मिस्टेक्स से आप बच जाओ, ताकि एग्जाम में आप नहीं करो मिस्टेक, है ना? यस, ब्रिक्स समिट हैपेंड रिसेंटली. यस, इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील. यस, एक चीज और, प्लीज टेल मी देयर इज one more important international event that will happen in Brazil.
एक और चीज कुछ ब्राजील में होने जा रहा है. व्हाट इज दैट? And if you tell me the name of the city, I'll be very happy to know. Which COP30, which conference of parties under what? Because there are a lot of COP conference of parties under Ramsar conventions, convention on biodiversity, convention on desertification, which wala? UNFCCC, right? So UNFCCC के अंदर we are having COP30 that is going to happen in Belém. Very good. Belém, Brazil. I think नवंबर के आसपास होगा. ठीक है. So this has to be very crystal clear. बहुत छोटी छोटी चीजें, जरा सा इधर से उधर होगा, आंसर कुछ और हो जाएगा. सो हैव टू बी वेरी केयरफुल प्लीज, है ना. प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, है ना. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर इट बिकम्स क्लियर इन योर माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, सिले मिस्टेक पर, ठीक है. बिकॉज 1, 2, 3 अगर सिले मिस्टेक हुआ तो ऐसे ही पूरा कंपटीशन से इधर उधर हो जाएगा पूरा, ठीक है मामला. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ट्राई टू इंश्योर दैट एटलीस्ट जो आता है वो गलत नहीं हो एग्जाम में, है ना. एटलीस्ट वॉट एवर यू नो you should not commit mistake in that, है ना. Johannesburg Summit, South Africa. So the right answer is D is the right answer. So here is India. This is South Africa. This is Johannesburg. And I'm sure you must be aware this South Africa is having 3 capitals. Pretoria, Cape Town and Bloemfontein. शायद आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लूमफाउंटेन, है ना. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. अच्छा, यहां से एक फादर ऑफ नेशन का नाम बताइए और इनकी बुक का नाम बताइए. कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में. प्लीज टेल मी फादर ऑफ नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट ही रोट, अ वेरी फेमस बुक. हाँ, नेल्सन मंडेला. हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल, कैपिटल अलग अलग जगह, राइट प्रियंशी. हाँ, इनकी एक बहुत बुक, फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग इधर उधर पूछ देते हैं. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ही हैड टू रिमेन इन जेल फॉर आई थिंक 27 years समथिंग. कई सालों तक उनको जेल में रहना पड़ा था, है ना. यस अदीजा, वेरी गुड. श्रेयास, गुड, ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ ये तो ऑलरेडी वी आर डन विद दिस. सो प्लीज आंसर इट एवरीवन. आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू आंसर. देखो ये वाला COP29 यहाँ हुआ था लास्ट ईयर. सो Brazil COP30 UNFCCC. So A is the right answer. Very good. Many people answering, है ना. तो हम लोग देख लेते हैं. So Belém, है ना. So here is India. This is Brazil. This is Belém. ठीक है. और रियो डी जेनेरो नीचे में कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे आर रियो डी जेनेरो समवेयर, रियो. ओके, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, अभी रियो में ब्रिक्स समिट हुआ था, है ना. और बेलेम विल ऑर्गेनाइज COP30 अंडर UNFCCC. प्लस एक चीज और पता होना चाहिए क्या, कि रियो में एक बहुत फेमस समिट हुआ था, एनवायरमेंटल समिट. कैन एनीवन टेल मी व्हिच ईयर इट हैपेंड? Rio is famous for that also. A very famous environmental summit had happened. कब ईयर बताइए? Yes, Earth Summit, very good. 1992, famously called as Rio Summit or Earth Summit. But इसका ऑफिशियल नेम क्या था? UNCED, UN Conference on Environment and Development, ऐसा कुछ नाम था ना. गुड, वेरी गुड. सो इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास लिया था, इसको आप जाके सर्च करना. एनवायरमेंट समिट्स करियर लॉन्चर. ठीक है, आपको एक डार्क ग्रीन कलर का थंबनेल मिलेगा, बॉटल ग्रीन कलर का. यू कैन वॉच दैट. हाँ, इट वाज इन एनसीईआरटी क्लास 10. हाँ, बहुत जगह था एनसीईआरटी में, राइट. यस, यू वर राइट. आई थिंक क्लास 9 वगैरह में, पॉलिटिकल साइंस में किसी में भी था, ज्योग्राफी में था आई थिंक. यस, हाँ.
The next is, who is the present UN Secretary General? We are done with this. The right answer is option C. ठीक है, and he is actually from Portugal. तो ये तुम लोग जानते हैं अपन. ठीक है, इससे पहले घाना के रहे थे कोफी अनान साहब. सो ये रहे थे कोफी अनान 1997 से 2006. ये घाना से थे. तो हम घाना क्यों आइडेंटिफाई करें? रिसेंटली मोदी जी विजिटेड घाना, तो शायद ये वाला क्वेश्चन ऐसे एंगल से पूछ दे, बिकॉज मैंने देखा है क्लैट को घुमा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन. सो रिसेंटली मोदी जी विजिटेड घाना. घाना इज एन कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, सो 1997 से 2006 तक मिस्टर कोफी अन्नान सर्व्ड एज यूएन सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, उसके बाद जो है ना 2007 से लेकर 2016 तक बांग की मून फ्रॉम साउथ कोरिया. ठीक है, और अब एंटोनियो गुटेरेस है सिंस 2017. आई एम ए जेई एस्पिरेंट. ओके, प्रॉमिस दैट यू कैन वॉच इट, नो प्रॉब्लम, है ना. सो वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क इज कि हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल? जब इतना यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है तो ये भी पूछ लिया जाए. एंड आई एम श्योर वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल, बट इफ यू आंसर इट आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल, विच कंट्री? कौन से कंट्री से थे? यस, ट्रिगवी लाई. Which country he was? Norway. Ashim, very good. Huh? So C is the right answer to this question. So एक तो पहले बनाए गए थे लेकिन ये टेम्परेरी थे, तो इसको उनको मेन नहीं माना था. दिस इज एन एक्टिंग वन. मेन ट्रिगवी लाई साहब को माना था नॉर्वे से, है ना, एंड ही रिजाइंड. ओके, अच्छा एक चीज और पूछते हैं. देयर इज एक्चुअली वेरी फेमस पीस कीपिंग फोर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. आपने नाम सुना है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएनपीकेएफ. हैव यू हर्ड दिस? इट इज ऑल्सो फेमसली कॉल्ड एज डैश हेलमेट्स. कोई बता सकता है? देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. लीग ऑफ नेशन से कम क्वेश्चन आता है जनरली यूएन से. हाँ, ब्लू हेलमेट्स. वेरी गुड इश्मित, बिकॉज दे वियर ब्लू हेलमेट्स. And even India also contributes. Indian policemen and army men also go and contributes. So this was a brainchild of which UN Secretary General? And the options are in front of your screen. Janjuri Chang, you are asking about January, February, and August. Yes, we are having. Go to the playlist. We are having monthly current affairs. Dark blue color thumbnail, monthly current affairs. It would be written. Watch that. In one video, I've discussed one entire month. Yes. So out of these 5 in front of you, who actually gave the concept of UN peacekeeping force? One of India's officer was awarded, right, Ishmit? Yes, the answer is Dag Hammer SK Jold. And there is an award also given in his name, Dag Hammer SK Jold Award for the UN peacekeepers. Okay, और भी award दिया था, but one is very famous, Dag Hammer SK Jold. And you know, he died in an aeroplane crash. As far as I remember, somewhere in Zambia, Zimbabwe, उधर कहीं पर, South Africa continent में कहीं पे somewhere he died in the plane crash. So that is what you should be knowing about. ठीक है, ठीक है. उसके बाद ये लोग रहे, फिर बाद में 5, 6, 7 कोफी अन्नान साहब रहे 97 से 2006, फिर बांग की मून साहब रहे 2007 से 16, एंड एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, बुत्रोस गाली सबसे शॉर्टेस्ट है. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ओके, अच्छा, अब जनरली गौर से अपने देखना, इनिशियल ईयर्स में रिच कंट्री से बनाया जाता है, लेकिन बाद में देखना नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा लोग हुए हैं. आर यू एबल टू सी? हाँ, he went for a humanitarian aid visit. He died in an aircraft crash. Yes, Dag Hammer scheduled. In recent years, if you see, normally developed, not very prominent developed countries are being represented as UN Secretary General. है ना, आप देखोगे बहुत ज्यादा फेमस कंट्री से नहीं बनाया गया. खैर, दिस इज एक्चुअली ये तो कल की क्लास का बाकी रह गया था, लास्ट क्लास का पीपीटी. लेट्स टॉक अबाउट द न्यू वन, राइट? सो just wait for a few seconds. Yes,
So let's talk about further about the next question, about the new PPT and the new question. What do you mean by the term Brexit? ये इवेंट टुडे आज भी कभी कभी अखबार में न्यूज में आता है. When you read editorial etc. तो ये टर्म आपने देखा होगा. अच्छा, recently this term was coming in the news in context of what? Yes, C is the right answer. Britain exiting from European Union. Excellent. Britain exiting from European Union. So ऐसे बीच से तोड़ दो ना. Brexit, Britain exit. Okay. So that decision was started somewhere in 2015-16. It took 4 or 5 years. Process होते गया, and Britain has got exit from European Union. So earlier, how many countries were there? It's quite easy, sir. Give us something challenge. Yes, Prometheus, please answer me why Brexit term was in the news in the last 2 months. Not 27, earlier 28 members, right? Why Brexit was in the news in the last 1 or 2 months? इस पर मैंने इससे related उस topic से related मैंने पूरी class ली थी. If you are reading editorials, you must have come across these the term Brexit 2 months back. अगर डेली पढ़ोगे तभी. Anyone waiting for the response? चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ. Very good, Ashim Asharbal. Great, fantastic. India UK CETA Comprehensive Economic Trade Agreement. So we did a separate agreement with UK because now UK is not a part of European Union. So if we want to do a trade deal, we cannot do it like with the entire European Union, because we have to do it separately. तो यूके के साथ हम लोग को अलग से ट्रेड डील करना पड़ेगा बिकॉज अब यूके बाहर हो गया. ठीक है. यस, एंड दैट इज व्हाट वी डिड रिसेंटली, सीटा इन जुलाई. सो आप सर्च करना इंडिया यूके एफटीए करियर लॉन्चर. यू सर्च दैट, यू विल गेट द वीडियो. आई हैव टॉट इट. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज. मैंने बताया भी था कि मेनी थिंग्स विल बिकम चीपर व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड एटसेट्रा. ठीक है. खैर, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. अच्छा, एक चीज और पूछें, ऑल्दो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट अंडर विच ट्रीटी, जो कि आप बोल रहे हो ना कि सर आप डिफिकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछिए, अंडर विच ट्रीटी एंड अंडर विच आर्टिकल a country can come out of European Union? Which article of the which treaty will be invoked? कौन से ट्रीटी का कौन सा आर्टिकल इन्वोक किया जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना है तो? Let me see. Very good, Adrija. You are right. Article is right, but which treaty? I'm very happy. Not Maastricht Treaty now. Article 50 of which treaty? No, Maastricht Treaty nahi answer. If you want to come out of the European Union, if the country wants, there is some other treaties there. Article 50 is right. Great, Shreyas Parab. Very good. Article 50 of Lisbon Treaty. Wait, Lisbon Treaty or Treaty of Lisbon. This is the treaty. This is the article that was invoked by Britain to come out of European Union. Prometheus अभी हो सकता नहीं पूछे because ये उतना ज्यादा न्यूज में नहीं, but at that time it was in the news, so they could have asked. ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया और आप ऐसे ही बोल रहे थे कि आप सर आप चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछो, so I have asked you. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. वैसे हाँ, मे बी दे कैन आस्क बिकॉज कुछ भी वो कभी कभी उठा के पूछते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस. सो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? बताइए. अब somebody will ask me, sir, are you asking before Brexit or after Brexit? कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें उसका आंसर छुपा है. You have to read the question carefully. The answer is there. The answer is in the question. Whether I'm asking before Brexit or after Brexit. Grammar पता होना चाहिए. How many countries are? Are is का plural होता है are. मतलब ये present tense की बात हो रही है. Yes, very good. हाँ, प्रियांशी, right. हाँ, तो इससे आपको सोचना है कि अभी की बात हो रही है, तो इसका मतलब आज के दिन. So 27 is the right answer to this question. Currently we have, earlier there were 28, now we are having 27.
Yes, R means present. Good, very good. तो ये है अपना यूरोपियन यूनियन. सो हियर इज इंडिया. दिस इज यूरोपियन यूनियन. मतलब this is Europe, and of course not all the members of Europe are actually the members of European Union, but that is the case, so you should know it, है ना. Here it is. देखो कौन कौन प्रोमिनेंट कंट्रीज मेंबर नहीं है. कुछ तो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. देखो ये है नॉर्वे. नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रीन वंस आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है. अब देखो ये है इंग्लैंड, ये ब्रिटेन जो भी कह रहे हो, यूके, इट्स नॉट अ मेंबर. ये कौन सा कंट्री है? कैन एनीवन टेल मी? And I have told you many times. अच्छा पहले आप आंसर करो. You should know the prominent country is not member of European Union. हाँ, European Union Parliament is also there. Yes, Switzerland. मैंने आपको कई बार बताया है, like Turkmenistan in Central Asia, Switzerland has been very much neutral even during world wars, etc. Very good, great. आई एम वेरी हैप्पी टू सी. और इधर कुछ कंट्रीज है, ठीक है, जैसे वो सब हो गया, अल्बानिया हो गया एंड अदर कंट्रीज, मॉन्टेनेग्रो एटसेट्रा. तो इसमें भी वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, विच इज दिस कंट्री जो अभी मैंने हाईलाइट किया. आई एम राइटिंग वन हेयर, वन. बताओ ये वन कौन सा कंट्री है? Yes, when the war started, Ukraine applied for the membership of European Union, but till now it is not a member. ठीक है, यूक्रेन ने अप्लाई किया था कि हम भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए जैसे वॉर शुरू हुआ, लेकिन वो बने नहीं है. अच्छा एक चीज और बताओ, दिस इज टू, विच इज दिस टू? ये क्या है? Great, Ashim, very good. Prometheus, Belarus. And why is Belarus not a member of European Union? Yes, big ally of Russia, Priyanshi. Very good, fantastic. So this is Russia. तो ये वाला पूरा रशिया इधर का ना युद्ध सा, तो उसका अलाई है. When so much so that it allowed Russia to invade Ukraine like this through its territory. इतना अलाउ किया कि अपना आराम से पार कराने दिया कि मेरे यहां से ले जाओ. ठीक है. हाँ, रशिया also would not join NATO. Yes, Ashmit. अच्छा एक और आई एम हाईलाइटिंग दिस वन, लिथुआनिया के नीचे में ये भी व्हाइट है. व्हाइट इज नॉट अ मेंबर. कोई बता सकता है? जस्ट वांटेड टू आस्क. एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इसको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं. यहाँ पे बाल्टिक, बाल्टिक सी है और उसके बगल में एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया है. नहीं, लिechtenstein वहां पे नहीं. लिechtenstein यहाँ पे. ये रशिया का हिस्सा है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बट यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ रशिया. डू नो दिस? ग्रेट, श्रेयस परब, फैंटास्टिक. ये रशिया का हिस्सा है. दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रशिया. ठीक है. So I'm very happy that you all are answering it, Kaliningrad. Great. So, khair. So I mean, you have a good knowledge. You all have a very good knowledge in this context. So I'm very happy. Let's move on to the next one. The European Union was established as a result of which treaty? Morocco, Maastricht, Lisbon, none of the above. Yes, Ashim, Ishmeet, Ishita, Kavinila, Adrija, you all right. The right answer is Maastricht Treaty. Lisbon Treaty establishment से related नहीं है, ठीक है. It was made later on, ठीक है. So the right answer is B is the right answer. If a country wants to come out of the European Union, then it can invoke Article 50 of Lisbon Treaty. अगर कोई बाहर आना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, तब वो आर्टिकल 50 का सहारा लेगा, लिस्बन ट्रीटी. ठीक है, ठीक है ना. बाद में देखो ये 92 से 2007 मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, बाद में आया था लिस्बन ट्रीटी, है ना. बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया कि अब आप यूरोपियन यूनियन से बाहर भी आ सकते हो, एटसेट्रा. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द करेंसी यूरो इज यूज्ड बाय हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन?
So those regions are called as eurozone, है ना? Oh, there is a confusion. Some people are saying A, some are saying B. Schengen states अलग, हाँ. The right answer is option B, 20 members only. Right. So basically this is Europe, है ना? इसमें इनका फ्लैग भी बना हुआ है ना? And can you please tell me which is the latest country to join eurozone? जनवरी में ज्वाइन किए थे, जनवरी 2023 में. लेटेस्ट कंट्री को बता सकता है? The latest one joined in January 2023, so it's almost 2.5 years. So these are 20 countries of eurozone which uses, I think Croatia joined. No, not Romania, Croatia. Schengen area is different. Romania और Bulgaria जो है Schengen area join किए थे. ठीक है. So this is actually you should be knowing about European eurozone. ठीक है. Here is Croatia. And recently Schengen area. So Schengen area is not equivalent to European Union. Eurozone area. ये जो है eurozone है. So these uses euro currency. ठीक है. इनमें से all 20 are actually members of European Union, but 27 members are there. Out of this, 20 are using European Union currency. ठीक है. Okay. हाँ. So that is what you should be knowing. और Schengen area different है. This here actually there is a visa free or entry movement of goods, movement of people. So recently Romania and Bulgaria joined it है ना. Bulgaria will join Euro. Okay, let's see. So ये यूरो है ना, आपको पता होना चाहिए. Now we are having 20, तो 20 को 19 को 20 हो गया है ना. Now the next one, quite interesting. Some person was saying कि सर यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है. Yes, you are right. Headquarter of EU. और ये कहाँ की कैपिटल है? Capital of what? Capital of Luxembourg? No. Belgium, right? Priyanshi here. So D is the right answer. तो यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में. ये यूरोप है, ये इंडिया है, ये वाला जो है तो ऊपर वाला नेदरलैंड है. ठीक है, जहां द हेग वगैरह मिलेगा, द हेग, एम्स्टरडैम. और ये है बेल्जियम और इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स. अच्छा, ब्रसेल्स में एक और चीज का हेडक्वार्टर मिलेगा. व्हाट इज दैट? देयर इज वन मोर फेमस थिंग व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड देयर. यस आशिम, ग्रेट. सो एक्चुअली NATO is also, North Atlantic Treaty Organization is also headquartered at Belgium, Brussels. Good, very good. I'm happy to see that you all are knowing it. ठीक है, ये बेल्जियम. ठीक है ना. How many members are there in African Union? Let's talk about African Union. In 1920 अंजुम 20 countries are using eurozone. ठीक है, euro currencies. How many members are there in African Union? So currently आज देखा मैंने, मतलब चेक किया था, 55 है. So B is the right answer. Yes, Belgium is famous among class 10 students, right? PDM, because there is a case regarding comparing Sri Lanka and Belgium of how to handle the diversity, right? Good. Very good. PDM, you're right. Yes. So this is actually this is Africa continent, and 55 countries are this member. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं. Which continent is having the maximum countries? कौन से कॉन्टिनेंट के पास सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? देखो, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया.
but it does not have maximum number of countries. Maximum number of countries is in Africa. नंबर्स में, ठीक है. एशिया लार्जेस्ट है साइज के हिसाब से, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा नहीं. देखो नहीं, देख के पता चलेगा. देख लो कितना सारा कंट्रीज है उसमें. यस, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ये भी बता दीजिए. एंड इट इज इन विच कंट्री. The right answer is yes, Addis Ababa. It is in which country? Yes, Adija Priyanshi, right? Ethiopia. Ashim. हाँ. अच्छा, एक चीज आप बताइएगा. There is a very famous UN agency whose director general belongs to Ethiopia. बता सकते हो कोई? Which person I'm talking about? Very good, Ashim. Director General of WHO. Yes. His name is? नाम क्या है उनका? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस. Great. Very good. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस. Actually, जब लॉकडाउन के बाद एग्जाम इनका नाम बहुत आ रहा था, so after lockdown when the questions were framed, this question was asked a lot. ठीक है. और इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को 2019 में नोबेल पीस प्राइज मिला था. अबी अहमद अली. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. ठीक. इथोपिया, लेट मी शो. तो यहां पर है. This is Ethiopia. And the capital is Addis Ababa. ठीक है. Now I have some questions related with this topic. ठीक है. इसका तो आंसर हो गया. What is Cairo? It's a city in which country? कोई बता सकता है? Abhijit Banerjee got Nobel Prize in Economics in 2019 and Abiy Ahmed Ali in the same year got in Nobel Peace Prize. Ishmeet, ठीक है. हाँ. Yes, Cairo, also called as Kahira, capital of Egypt, famous for a very famous river, famous for pyramids and river, है ना. So which river? And why that river is so famous? Nile. Nile River. Why it is so famous? Pyramids of Giza, right? हाँ. Longest river. Very good. देखिए कितना कुछ सीख लिए. Longest river of the world. Okay, and if I ask largest river of the world, content wise, water content wise, then what should be the answer? Amazon. Great. Amazon river in Brazil. ठीक है. Very good. Is the right answer. अच्छा, जो पिरामिड्स है, they were built by, इजिप्ट में पिरामिड्स है, they were built by the kings known as what? उस जमाने में किंग का एक खास नाम हुआ करता था. मतलब सीरीज ऑफ, यू नो दिस? कोई जानता है? Yes, pharaohs. Great. Pharaohs. Yes. And during one of the pharaohs era, there was prophet Moses, which is believed, which you will find it in Abrahamic religion. Okay. Islam, Christianity, Judaism. When you read, there's a prophet Moses also there during the era of one of the pharaohs. तो अब हम लोग थोड़ा सा नाइल रिवर जानते हैं. So Nile River, actually, one of them starts here, Lake Victoria, and goes like this.
द अदर स्टार्ट्स फ्रॉम इथियोपिया एंड लाइक दिस, ठीक है। हाँ, रामासीस 2 था, यस प्रोमेथियस, यू आर राइट, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। So Ramesses II was the pharaoh at that time during the time of Prophet Moses or Prophet Musa, ठीक है। So we were talking about क्या, हाँ, so ये हो गया व्हाइट नाइल लेफ्ट वाली, starts from लेक विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया लेक एक्चुअली कट्स इक्वेटर, और इथोपियन हाईलैंड से शुरू होती है ब्लू नाइल, बोथ मीट्स इन सुदान, सुदान की कौन सी सिटी है, खार्तूम द कैपिटल, एंड ये आगे जाती है नाइल रिवर ऐसे, और ये जाके मेडिटेरेनियन सी में फॉल्स, ओके। और यहां पर बहुत फेमस सिटी भी है, एक तो कायरो यहां पर है कहीं पर, और यहीं पर मिलेगा अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया का आपने नाम सुना होगा, और यहाँ पर एक डैम बनाया, आसवान डैम, इजिप्ट में बना हुआ है ना, आसवान डैम, ठीक है। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, हाँ अलेक्जेंड्रिया, यस यस, आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, वेरी हैप्पी टू सी दैट यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग, है ना। सो ये अदिस अबाबा की वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, ओरोमियो रीजन एटसेट्रा, ये हो गया। और त्रिपोली जो है लीबिया की कैपिटल है, यू शुड बी नोइंग इट, है ना, एंड केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। पेंसिल्वानिया इज इन अमेरिका, कश्मीर, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, इथोपिया हो गया, ये हो गया, है ना, ओके। अच्छा एक चीज बता दें, ये अक्सर न्यूज में रहता है, ये ट्रायंगल कौन सा पेनिनसुला है, दिस इज विच पेनिनसुला विच आई हैव हाइलाइटेड, famous peninsula because nearby you will find Israel etc and all. So Sinai, very good. Priyansi, Ashim, you all are right. Sinai Peninsula, ठीक है। और इसी से टच करता है गाजा, यस, वन बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, ग्रेट, वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, यू ऑल आर आंसरिंग इट, सो नजर ना लगे। एक चीज और बता दो, ये रेड सी है, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, यहां पर जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट, यस आशिम, वेरी गुड, बाब अल मंदब, बाब अल मंदब, why it is called as Red Sea, रीजन बाब अल मंदब। तो किसी ने लिख दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वो कहां पे मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समवन रोट इट मिस्टेकनली, सो वेयर यू विल फाइंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखो मैं मुंबई से चला शिप से, सो वेयर शुड आई गो टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मुंबई से अगर मैं शिप लेके चला तो कहां जाऊं, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शिया, वेरी गुड प्रियांशी, फैंटास्टिक, सो दिस इज पर्शियन गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ऐसे मुंबई से चलिए ऐसे लेकर के यहाँ पे पतला सर यहाँ पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रीजन इज, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, दिस रीजन इज फेमस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो अ लॉट ऑफ ऑयल टैंकर्स पासेस थ्रू दिस रूट, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा कुवैत, है ना, कतर, बहरीन, यूएई, सो यू ऑल फाइंड एट दिस प्लेस, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली और ऑयल के सिक्योरिटी के पॉइंट, हाँ जीसीसी कंट्रीज, वेरी गुड, दीज आर जीसीसी कंट्रीज आल्सो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना, ओके। अब हम जैसे मुंबई से यहाँ से चले, आई स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, सो अरेबियन सी से मैं आऊँ यहाँ आया, सो दिस आई हैव टू क्रॉस बाब अल मंदब, ठीक है, I crossed Bab al Mandab, I moved here, now I am going through Egypt, मेरा बीच में मान लीजिए I need to take refreshment, हमको थोड़ा सा बीच में रुकना है, तो यहाँ पर एक पोर्ट सिटी है सऊदी अरब का, I stayed there, what is the name of that port city, ये अक्सर न्यूज में रहता है,
Here is a port city which I'm highlighting with A. I have to stop here because हम कुछ खाना पीना ले लेता शिप में. Jeddah, very good, fantastic, Priyanshi. हाँ. Let's say, and after Jeddah I move further. So I cross the Egypt. यहाँ पर एक रास्ता है, इसको क्या कहते हैं? Please tell me. देखो ऐसे ही प्लेवे सिस्टम में वी कैन लर्न, है ना. सो देन आई क्रॉस इजिप्ट. सुएज कैनाल व्हेन इट वाज बिल्ट, कब बना था? (1869). ठीक है, ठीक है. अब मैं यहां से निकला, चलो लेट्स से हमको जाना है, इसके ऊपर इंग्लैंड है, यूके, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर कंट्री यूके, हमको वहां जाना है शिप से. ठीक है, तो चलो भाई सुएज कैनाल में पेमेंट किया, कुछ सब निकलते गए, है ना. फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक पतला सा रास्ता, इसका क्या नाम है? आई हैव टू क्रॉस दिस, देन आई विल गो टू द यूके. सो व्हाट इज दिस बी? ये क्या है? तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, ये वाला हिस्सा, और ये हो गया अटलांटिक ओशन. सो व्हाट इज दैट? Very good, Strait of Gibraltar. I'm very happy that you all are knowing this. Strait of Gibraltar. Who controls this? Spain or Morocco? कौन कंट्रोल करता है? Spain, Portugal, Morocco. Who controls? हाँ, Jeddah is headquarter of OIC. Very good, Smith. हाँ. Yes, UK. ना ही स्पेन कंट्रोल करता है, ना ही पोर्चुगल, ना ही मोरक्को. तो स्पेन और मोरक्को के बीच में, बट ये एकदम जो टिप वाला हिस्सा है, बोथ साइड विल बी कंट्रोल्ड बाय यूके. ठीक है, यही पता होना चाहिए. इट अपेरेंटली लगेगा कि स्पेन और मोरक्को के बीच में, बट वो वाला जो रास्ता वहां पे यूके कंट्रोल करता है. ठीक है, एक और चीज मैं बताऊं, यहां पर एक छोटा सा टिप देख रहे हो, ये ओमान कंट्रोल करता है, नॉट यूएई. ये जो ट्रायंगुलर कंट्री है, दिस इज कंट्रोल, ये यूएई है ना, मोसंदम पेनिसुला कहते हैं. यस, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. So I'll keep on discussing it in the upcoming class, in the upcoming next Sunday 8 p.m. ठीक है, I hope the class is very interesting and you all are answering it. So I'm also feeling very happy. हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.